हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। आई होप आप सभी हमें सुन पा रहे होंगे। ईशा, ललित, मोहम्मद फैजान, पवन, नितेश, रितिका, दिनेश। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज मास्टर क्लास सेशन। नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लास सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नए अतिथि के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप सिस्टम। स्टार्टअप पे दोस्तों बहुत बातचीत होती गई है। तो स्टार्टअप पे ही हम एक बार फिर से आज आपके सामने एक नए एक्सपर्ट के साथ हाजिर हैं। हमारे जो अतिथि हैं वो है, उनका नाम है अवनीश राणा। आप स्ट्रेटजिक लीडर हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हैं, डाटा एक्सपर्ट हैं, स्टार्टअप मेंटर हैं, स्टार्टअप के टेक एक्सपर्ट हैं और नोएडा एंजल नेटवर्क को भी चला रहे हैं। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, उसके बाद सर का मैं वेलकम करूंगा। सर ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है 1999-2003 में। और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने पीजीएम जीबीओ इंटरनेशनल बिजनेस किया है 2004 से 2006 में। और सर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, जहाँ के राहुल गांधी सांसद है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वहाँ से सर ने सर्टिफिकेशन इन डेटा साइंस किया है। और सर की पहली जॉब 2005 में एयरटेल कंपनी में लगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में। उसके बाद सर टाइम्स इंटरनेट में आए, भारती टेलीसॉफ्ट में रहे, वर्जिन मोबाइल में सर ने काम किया, एमटीएस इंडिया में सर ने काम किया, इंटेलिसेंस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट हेड के रूप में काम किया, एजीएम मार्केटिंग वीएस हेड मुंबई आइडिया सेलुलर सर्विसेज लिमिटेड में सर रहे, डीजीएम प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन हेड रहे सर एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। और अभी नोएडा एंजल नेटवर्क को सर देख रहे हैं। तो अवनीश जी, आपका सफलता के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार थैंक यू पुष्पेंद्र। सर। तो जो डिजिटल मार्केटिंग और बाकी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सुनने के लिए उपस्थित हैं, तो सबसे पहले जो हमारी एक परंपरा है कि जैसे ही कोई हमारा अतिथि पहुंचता है तो हम सबसे पहले उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, उनकी लाइफ एंड हिस्ट्री के बारे में उनसे जानना चाहते हैं। तो सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई है, और इंजीनियरिंग के बाद 2 दशकों से आप एयरटेल, आइडिया, वर्जिन, एमटीएस, टाइम्स इंटरनेट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके आ चुके हैं। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अब तक कैसी रही, एयरटेल के बाद से अब तक? श्योर श्योर पुष्पेंद्र। So first of all, I would like to thank you and Himanshu Gautam sir to give me an opportunity to speak in this session. मोस्ट वेलकम। I'm also grateful to the entire audience who have taken their time from their busy schedule and get into this particular session. My only request to everyone is, okay, so I want this session to be interactive. I'll try and speak in Hindi, but थोड़ा Hindi English mix रहेगा because it's more or less now it's basic language when it comes to English, right? But I want everyone to be interactive. In case you are not able to understand anything, or in case you want me to repeat anything, please feel free to stop me at any point of the discussion. I would love to repeat myself and I would love to answer any your questions. So that's the first thing, the agenda I just want everyone to adhere to, right? जी Now, when it comes to my personal journey and professional journey, I born and brought up in Delhi only. जी So the way I'm speaking English, my English was not good. So I started my journey in Hindi medium school. तो मैंने फर्स्ट और यू कैन से फिफ्थ क्लास तक सिर्फ हिंदी में आई हैव स्टार्टेड माय एजुकेशन, एंड देन आई इवॉल्व्ड माय सेल्फ and completed my schooling from Delhi only, from Indira Ideal Senior Secondary School. Post that, I have joined Delhi College of Engineering and completed the same by 2003. Post that, I have done my MBA from Shriram College of Commerce, Delhi University. That was 2004 when I joined SRCC college. But if you talk about my professional journey,
right? I started my career with Airtel as a management trainee in 2005. That is when I was in second semester of SRCs. It was really difficult for me to manage both college and my training with Airtel. Though Airtel was supportive enough to, they have given me flexible work environment. But in terms of my hard work, if I talk about my hard work starts at that time. At that time, I used to wake up around 7:30 a.m. in the morning, reaches my college, which is in North Campus around 9, attend my all classes till 1 or 2 p.m., then rush back to Airtel in Gurgaon office. And after completing my assignment, I used to reach home by 2:30 a.m. or 3 a.m. in the morning. So it was like while you maintaining your attendance in the college and you maintaining the quality in your workplace, I have hardly slept at that particular time. But yes, that hard work has paid me uh, a lot, and now I am in front of you guys speaking in SAFALTA Talks and want to share my knowledge about startups, how angel investors are, why they invest. So that is the hard work I'm carrying. So in terms of my professional experience, I have 18 plus years of experience, as rightly said by Pushpinder. I started my journey with Airtel, then Times Internet. So I am, if you talk about me, I am a product and operations expert. I have always developed the product from conceptualization and then monetize it to generate revenue. So if we talk about few of the products where I have done or I am proud of my contribution is starting off the career with Bharti Anisoft. I have worked on live TV and streaming services. That was the time when 3G was not even launched in India. It was a great challenge, or you can say huge challenge, wherein we were given a task to provide seamless streaming solution at 2.75G, which you all know it's edge network at that time. My work over there was really appreciated because we have done successful demos with MTNL, BSNL, though we were then we have launched this after 2 or 3 years when I left Bharti Airtel. But my contribution towards the product industry was highly appreciated when I have joined MTS India to talk about. So MTS, I got the privilege to work on Facebook Brew application. So if you all know Brew handsets or CDMA handsets are 700, 800 rupees. It was really difficult for users to provide Facebook at that time on those particular phones. And we were able to customize that application for those smaller handsets, and I was able to add 1 million odd subscribers in 3 months. For this particular contribution, I was given Employee of the Year award with MTS. When it comes to more products, I'll take few of the names as well. If you were seeing Map My India application or store locator application, it was conceptualized in 2006 or you can say 2007 when I was with Virgin Mobile. And then BlackBerry MTS India launch was being conducted single-handedly by me. And in terms of innovative product, recently when I was working with ARI Solution, which is Advanced Research Institutional Solutions Private Limited, so I have developed Wi-Fi monetization platform. In 2017, we developed this, wherein we are converting the cost center into a profit center for all, say, public sector companies. The railways is providing free internet, Delhi government is providing free internet, but they are not able to basically monetize it. So we have launched this product in 2017 with Latin America, in Guatemala, or you can say digital El Salvador. And it has given us the fruits at that time. And now this has acceptability within India. So not only product, so I've managed operations at scale, business of around 1,000 crores,
with more than 200 vendors at the same time and a team size of around 500 people, right? So right now, so this was my journey as a working professional so far. So now, right now, I'm associated with Noida Angels Investor as one of the investor panelists, or you can say mentor, right? So this platform is a unique platform which we have developed. When I say we, this platform was being conceptualized by Sukhbir Singh. If you guys are aware, he is the founder of Flatmate. So Flatmate is a very good application wherein you want to basically find your roommates. You can easily find, go there, register yourself, and basically find your flatmate, right? So he is the one who said, "Okay, Avnish, let's do it." So we joined hands together and came up with Noida and this network. And you guys won't believe, in last 3 months we have been approached by 15 startups, minimum 15, and with a minimum investment of around 50 lakhs to a maximum of $30 million, which is 240 crores almost. And in terms of, when I talk about the investor community, we have individual investors, entrepreneurs, we have corporates and financial firms associated with it. So total corpus which Noida Indus Network carries right now, it's almost 400 to 500 crores. Though it is scattered, it is not entirely under Noida Indus Network, but the worth of our investors is like this. So this concept is new, but still people are coming, and you won't believe there are a few startups are already in second or third round of uh, their investment journey. So that's basically in short about my journey to all of you, how I evolved from a trainee to now a mentor, angel investor with Noida Angels Network. वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपको जान के। और आपको बधाइयाँ, आपकी कंपनी बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाली है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। तो कि इस मंच पे जो सभी बच्चे हैं वो टियर 2 टियर 3 सिटीज के हैं, तो हिंदी उनके लिए ज्यादा समझी जाने वाली भाषा है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो मैं एक अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, एक सवाल, उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में जरूर बात करूंगा, नोएडा एंजल नेटवर्क के बारे में विस्तार से, कि कैसे काम कर रहे हैं। तो देश में 2023 के डेटा के अनुसार तकरीबन 99,000 स्टार्टअप हैं जो अभी पंजीकृत हैं, और जिसमें 111 स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुके हैं। यूनिकॉर्न की अभी मैं बात कर रहा था, 7,500 करोड़ की जो कंपनी मार्केट वैल्यू अपनी कर लेती है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो 2022 से ही भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है, और भारत में 111 कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न है। 645 कंपनियां अमेरिका में यूनिकॉर्न है, वो नंबर 1 पे है, और 302 के आसपास चीन की कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न है, वो नंबर 2 पे है। तो जिनमें से कुछ क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों के नाम आप सभी जानते हैं, तो उनमें 2-4 नाम मैं ले रहा हूँ। वैसे नाम की लिस्ट तो 111 तक गई है। ओयो है, ओला है, क्रेड है, ड्रीम 11 है, ममा अर्थ है, क्रिस्टीन केयर है, स्विगी है, बाइजूस है, इनमोबी है, बोट है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न बनी हुई है अभी। तो इस मंच पर जो सर उपस्थित हैं, स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के हैं, जिनको स्किल के बाद ई स्किल के सहारे कोई बेहतर जॉब डिजिटल सेक्टर में मिलेगी। लेकिन इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, जो अपना खुद का स्टार्टअप लेके आना चाहते हैं। कोई अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लेके आना चाहता है, कोई अपना बुटीक एजेंसी लेके आना चाहता है। तो उन्हें स्टार्टअप शुरू करते समय क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ताकि उनका स्टार्टअप रुके नहीं बल्कि बढ़े, आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे। Okay, so I would like to answer this in a simple way, right? So when you talk about startups, right? So startups should understand money is the byproduct. Okay, if you run for the money, money will never reach you, right? So you have a concept, right? Believe in your concept. When you believe in your concept, money will flow, right? So maybe one investor will say no, two investors will say no, three investors will say no, but fourth investor will invest in your idea. Not only in your idea, the investor will invest in you, because every investor
see how passionate you are towards your product. So I'll give you a classical example, though I have been into this for 3 months. There was an investor came up, they want almost 50 or 60 lakhs of rupees, right? So we asked, why you want? Well, we want to develop the technology. Then they are confused when I asked, what is your 3 years down the line goal? He said very clearly, Avnish, I would like to take my valuation to say 10 crore, then I'll exit the business. This is not the kind of things we expect from the startups. Believe in your ideas, have at least 3 to 5 years of plan with you. You can't say you want to exit, you want to increase your valuation, right? For me as an investor, I invest in an individual who is passionate, who lives with his idea, right? And then money is the byproduct. If the idea will grow, then money will follow. So if we talk about OYO, idea, the concept was providing a room at 750 rupees to 1000, right? It was a mass scale business, right? Money is the byproduct, right? That is something which I tell each startup or individual who want to start their business. Believe in your idea and work towards the idea. Money will flow. I know you require money for operations, but angel investor will see your passion and the idea and then will invest. Don't run towards the money. It will follow. बहुत अच्छी सलाह दी आपने। और मैं अब आपसे आपके स्टार्टअप के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो आपका नोएडा एंजल नेटवर्क है। आप कोई प्रेजेंटेशन शेयर करना चाह रहे थे बच्चों के साथ, उसके लिए सो प्लीज गो अहेड। Sure. Let me know once you are able to see my screen. Yeah, we can see. Okay. So सर एक्सक्यूज मी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अवनीश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, please. Go ahead. Okay, sorry. So sorry for this. Okay. So I will be covering Noida and this network in later slides of this presentation. So this presentation, what I'm trying to bring onto the table is like what kind of angel investors are available, why they invest, right? And what exactly is their role in kind of investment, right? If this thing people will know, or the startups or the individuals will know, it will be easier for them to approach the angel investor and to gauge what exactly their mindset is all about. So that's where this entire presentation is made in a step-by-step manner, so that everyone should understand this in more clearer way. Okay, so let me start. And please, I want this session to be interactive. Okay, in case anyone wants to ask any questions in between, please let me know. Okay. Yes, please. Okay, so I will start with angel investors. First question which comes in everyone's mind, who are they? Next is why they invest. So let's talk about who are they first, right? So there are different categories of investors. So what I'm showing right now, it's only 5 categories of them, right? So first is the professional angel investor. So these professional angel investors are experts in their field. Say some of them are doctors, some of them are engineers, some of them are industrialists, right? They usually basically invest in area of their expertise. If there is a doctor, he would like to invest in healthcare business, right? Because they have an expertise on that particular domain. Similarly, engineer will invest in
if there is manufacturing, engineering, or say chemical, according to liking, they invest in their business. Second set of investors are the corporate angels. Again, these corporate angels are not the corporates. These are the professionals who are or who were associated with large companies. And they basically invest in line of their business. Say if there is an individual who is into manufacturing of batteries, so he will look into the companies or startups who are trying to innovate themselves in that particular line of business. So these are those kind of corporate angels who will invest in the same domain again. Now, third set of investors are the technical angels. So when I talk about technical or tech angels, Nerd Angels Network is very close to me. So these kind of angels have good technical knowledge, right? So as I said, in Nerd Angels Network, if we talk about Sukhbir and Flatbed, they have good technical team, right? If some starters want to pitch any product to them, they would like to invest in their technology because they have the expertise. They want startup to run their show and technical will be managed by them. So that's where the technical expertise come handy for these particular startups, right? Fourth, being the strategic angel investors. So these are you can say these are the experts within specific industries, and they bring the mentorship and the knowledge from strategy point of view, right? Which will help startups to grow their business. So this is you can say is the most important thing wherein startup has to decide what they want. They want to run towards the money or they want to run towards the expertise. Because one mentor can bring lots of connections. And those mentors have the vision to take your company to 10x level, not 3x. So if you ask me personally, these kinds of angel investors or investors I really appreciate a lot because they bring more than money onto the table. Last are the entrepreneurs. So these are the successful entrepreneurs who have established their business already. Now they want to diversify their business, or you can say they want to mitigate their business by investing in diversified fields so that they can get return very easily. So this is all about the kind of angel investors. Anyone has any questions so far? एक क्वेश्चन है कोई इन्होंने पूछा है कि क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं? I will try speak in Hindi यार मैं थोड़ा okay I'll try. इंग्लिश कर लीजिए सर, आधा हिंदी आधा इंग्लिश कुछ टाइप ऐसे ट्राई करता हूँ मैं पुष्पेंद्र बिकॉज लैंग्वेज ही ऐसी होगी डे टू डे में क्यों हिंदी निकलती है बट इतनी नहीं निकलती है. सो आई माइट not be able to explain very well in Hindi, but still I'll try. Valid question, right? So next slide पे चलते हैं. Yes. So next is why this अब angel investor invest क्यों करता है, right? There are different aspects of it. और आप ये भी बोल सकते हो ये जो स्लाइड में शो कर रहा हूँ, this is the main slide for which I am here. The role of angel investors in startup ecosystem. Okay. Angel investor invest क्यों करेगा? First, obviously पहला जो दिमाग में आता है वो पैसे का ही आता है, right? So even if अगर मैं यहाँ पे किसी से भी पूछूंगा कि भाई अगर मैं 10 रुपए इन्वेस्ट करूं तो how much money they want in return? So they will say नहीं मैं 10 के 12 तो मिलने चाहिए, right? या मुझे 20 रुपए मिलने चाहिए, right? So first is they look for potential high returns, right? But we should not forget the fact कि जो angel investor invest करता है काफी early stage पे invest करता है, right? So the returns are proportionate to their risk. जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा पैसा होगा, right? So first point is जो angel investor पैसा लगाता है obviously
everyone will invest कि मुझे ज्यादा पैसा बन जाए, right? And these kind of investors are sometimes can be the short-term investment investors or can be long-term investors, right? Because इनका main motive होता है पैसा डालो और 2-3 साल में पैसा का रिटर्न लो और निकल जाओ. But कुछ investors रहते हैं for the longer journey because they want more returns out of it. Second set of kind of why they invest is their passion for entrepreneurship. ये वो इन्वेस्टर है, ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मैंने पहले स्लाइड में बताया था. दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स. उन्होंने अपने बिजनेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिए हैं एंड दे वांट टू सपोर्ट द न्यू स्टार्टअप्स नाउ. दे वांट टू मेंटर दो स्टार्टअप्स, राइट? बिकॉज दे नो के उनको जो स्ट्रगल हुआ है, राइट, उनको जो जिस तरह उनकी जर्नी बढ़ी है, दे वांट others should not repeat themselves, right? So if any startup lying over or they enticed by the idea, they will invest and they want to become a shareholder for that particular startup as well, right? These are the entrepreneurs. Okay. Third set again is expertise and mentorship. As I said, the corporates or the individuals, right? These angel investors are highly qualified professionals, right? So if we talk about this, they must be having 10 years, 20 years of experience in their field. So I'm from Delhi College of Engineering. So lots of investors, basically they are happy giving you the mentorship, right? Because at a minimal cost or free of cost, they will associate with you not only as a capital investor, they will associate with you as a mentorship because they are carrying the knowledge and the connections with them, right? With their connections, you guys can grow 10x, 20x, sometimes 100x, right? So mentorship or guidance is important. If I talk about in terms of for any startup, these are the keys investors they should be taking along with them rather than financial investors like who only wants their money back, right? Fourth set of angel investment investors are like they want to diversify their investment portfolio. So as I said, instead of अगर हम शेयर मार्केट में भी जाते हैं, हम एक कंपनी के शेयर नहीं खरीदते हैं, हम 10 कंपनी के शेयर खरीदते हैं ताकि अगर मुझे एक में लॉस हो रहा है तो एक में प्रॉफिट हो जाए, राइट? So these are the angel investors who want to diversify their portfolios. So they're not linked to any kind of industry. If someone is basically investing in a manufacturing industry, at the same time they are investing in digital company as well, technology company as well, right? So they optimize their money when they invest in a particular startup. Last is access early stage opportunity. So most of the angel investors, as I said, right, startups में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अर्ली स्टेज है. अर्ली स्टेज पर उनको एडवांटेज ये मिल जाता है कि भाई they can get mentorship, they can get higher share from their company. जो कंपनी का 2-3 अगर कोई स्टार्टअप 2 साल बाद फंडिंग लेता है, उसकी वैल्यूएशन 5 करोड़ हो जाती है, वो 1 करोड़ पे 20 लाख इन्वेस्ट करके 20% शेयर ले लेते हैं. So this is the advantage of investing in early stage startups wherein angel investor can take an advantage of the startup sometimes, which is not good, but it happens, right? Because startup need money for all those running their operations and marketing business. So these are the kind of investors who invest in early stages, right? Next is I'll talk few things about Noida Angels Network, though I have already spoken about Noida Angels Network. So these are few of the professionals associated with Noida Angels Network. So if we talk about Subir is founder of Flatmate, as I said before, right? Shalendra sir is our Delhi College of Engineering ke alumni hai, right? Himanshu is also from Delhi College of Engineering, right? And he is an artist as well. He runs his event-based company,
which is doing good, and he has almost 2 million odd subscribers on YouTube. So it's a mixed match of individuals and corporates. If under corporates, if you talk about Jain, he is running a financial investment firm. That's the company who is carrying the maximum funds for our investors. So this is it in terms of the role of angel investors in startups ecosystem and the kind of work we are doing in terms of Noida Angels Network. Anyone has any questions so far? किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। सचिन ने हाथ खड़ा किया। सो मिस्टर प्रिंस आप सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद सचिन के पास बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पहले तो ये कि आप जो सर बातें कर रहे हैं, मुझे सारी बातें बहुत समझ में आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही सटीक आप आंसर दे रहे हैं सर। मेरे पास 2 से 3 क्वेश्चन है, अगर आप परमिशन दे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे मैं पूछना चाहूंगा। प्लीज पूछिए। तो सर मेरा सर पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर आप बहुत सारे बिजनेस में सर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो सर अगर फिर आप वहाँ पे मतलब आप पैसा भी देते हैं, समय भी देते हैं, तो अगर किसी भी रीजन से वो फ्लॉप हो जाती है तो सर हाउ टू मैनेज, मतलब आप हाउ टू रिकवर योर मनी, मतलब लॉस कैसे आप करते हैं? पहला इसका क्वेश्चन आंसर तो आप ही ने दे दिया प्रिंस ठाकुर। जी सर। कैसे दे दिया? आपने क्या बोला? हम बड़े सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने प्रेजेंटेशन सुनी हो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क, ठीक है, अगर मैं 10 जगह इन्वेस्ट करूंगा, राइट, आई डोंट एक्सपेक्ट कि मैं 10 जगह से पैसा कमाऊंगा, करेक्ट। 10 में से कभी 2 बिजनेस भी चलते हैं, 10 में से कभी 4 बिजनेस भी चलते हैं, बट वो पैसा वहां से रिकवर हो जाता है। बट जो बिजनेस चलता है वो आपको 10x to 100x लेकर जाता है। ओके सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर आप कौन से फील्ड को ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट? सर आप कौन से सर मार्केट में बहुत सारे सेक्टर हैं, फील्ड हैं, जैसे कि कॉमर्स हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, तो आप कौन से सेक्टर को सर पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? कुछ इसके बारे में थोड़ा। My inclination is always towards technology. Technology entices me, right? I usually, if you talk about me, I invest in the technology, right? Business is something, startup has a vision. So technology sector is something in terms of I can help startup taking their technology in terms of application development, because we have the expertise, right? I'm a product and operations expert, right? I can run the show from backend, right? And at the same time, I expect these startups to run their show when it comes to marketing. So answer to your question is technology sector entices me a lot, and that's where I am keen to invest. Okay, And sir. basically the backbone of all the startups. If my technology fails, अगर मैं user experience दे ही नहीं पाया, correct, तो product fail ही हो जाएगा. 90% of the products are failed because of bad user experience. सर तीसरा मेरा मतलब क्वेश्चन था कि सर अब मैं मतलब आपके ना फेलियर, मैं एक सक्सेसफुल और फेलियर के बारे में थोड़ा मैं जानना चाह रहा था कि सर ऐसे मतलब कौन सी कंपनी में मतलब होता है कि मतलब आप 50 कंपनी में मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब होता कभी कभी कि थोड़ा परसेंटेज बार्गेनिंग में मतलब हो जाती है, मतलब किसी भी रीजन से आपने उसको नहीं मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए आप, तो बाद में होता है यार कि अगर मैंने काश इन्वेस्ट कर लिया होता तो मतलब बेहतर होता। और दूसरा होता है कि यार चलो अच्छा हुआ कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, तो मतलब कुछ ऐसी कंपनियां हैं क्या मार्केट में, थोड़ा इसके बारे में बताइए। Okay, to answer your question, so far we have not experienced this. We just started 3 months back, right? So as I said, few of almost from 15 odd startups, right? We are taking forward only 4 startups ahead, correct? हमारा जो motive रहता है, we again is, as I said in my presentation, money is the byproduct. If you come for us for money, we will not give you the money. If you come with your idea and your 5 years or 10 years plan, we will definitely invest, right? So ups and down हर business में होता है. You should not regret what has happened in your past.
you should move ahead. राइट अगर मेरा पैसा कहीं डूबेगा मैं उसको हर किसी दूसरे से पैसा निकाल के ही लेकर आऊंगा रिग्रेट नहीं होता है बिकॉज इट वाज माय डिसीजन एंड ऑफ द डे आई हैव चूजन नॉट टू इन्वेस्ट आई हैव चूजन टू इन्वेस्ट सो रिग्रेट नहीं होना चाहिए इफ यू आस्क मी देयर इज नो रिग्रेट इट इज माय डिसीजन एंड आई एम कंप्लीटली रिस्पांसिबल फॉर माय डिसीजन whether it's good or bad no regrets I hope I'm able to answer your question. हाँ यस प्लीज सर ये जो शेयर है आपका स्क्रीन इसको आप हटा देंगे तो आप पे हाईलाइट हो जाएगी फिर अगर आपका ये कंप्लीट हो गया है तो Prince, you are speaking on mute. हाँ प्लीज प्लीज कुछ कहना है आपको डियर सर मतलब एक था कि मतलब आप जैसे मतलब आपके पास कोई अप्रोच करता है कंपनी के मतलब आप इन्वेस्ट करने के लिए तो सर आप उसमें क्या देखते हैं सर्च करते हैं एंड लास्ट था ये कि मतलब अगर आपके साथ में मुझे कि मतलब आने वाले 2-3 महीने बाद आई एम डिजिटल मार्केटर आई वांट टू डू वर्क विथ यू तो हाउ टू मतलब वर्क विथ यू सर आपके साथ में मैं कैसे काम कर सकता हूँ कुछ It's very simple, Prince. Noida Invest Network की website है noidainvestnetwork.com, right? You can upload your startup idea over there. We will call you up for first round, and basis the first round, we'll decide whether we would like to move ahead or not. You're most welcome any point of time. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Thanks, Prince. सर जो स्क्रीन शेयरिंग है आपकी ये वो कर लेंगे क्या सर वापस Okay. तो आपके ऊपर फिर हाईलाइट हो जाएगी यस सो हमारे पास अभी सवाल सचिन का है सचिन पूछिए अपना सवाल प्लीज Good afternoon, sir. My question is, sir, how do you approach risk mitigation in your investment strategy? As I said, diversification of the investment. That is the only place where I see risk can be mitigated. Plus, having checks. Suppose I've invested in a particular startup, so there are checks involved, right? So even if we are giving money to anyone, it is not they're free to use any kind of money. So we check, we audit their financials quarterly, sometimes monthly, starting, and that's how we basically mitigate our risk. So if we see if the startups or you can say founders are not doing good, we take the chart sometimes, right? And we'll take the startups ahead. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. सर मुझे कुछ सवाल पूछने थे आपसे जैसा कि मैं पूछ रहा हूँ आपका सर कैमरा इधर वाला जो उस वाले में देखिए आप जो मेरी तरफ है आपका अभी सिस्टम ठीक है Okay, wait. Is it fine? हाँ यस दैट्स फाइन सर आपका जो मैं देख रहा था लिंक्डइन पे प्रोफाइल तो टेलीकॉम सेक्टर में आपका बहुत लंबा कैरियर है अनुभव है और अभी आप स्टार्टअप्स को मेंटर कर रहे हैं तैयार कर रहे हैं अगर जैसे कि यहाँ पे स्टार्टअप मेंटर के रूप में बैठे हुए हैं तो ये बिल्कुल अलग तरह का काम है टेलीकॉम से अगर मैं देखूं इसको तो एक तरह की अलग चुनौती है मतलब रिलायंस एयरटेल आइडिया टेलीकॉम सेक्टर में जो आपने काम किया वो अलग है स्टार्टअप का चैलेंज अलग है तो सर इसको उसके बनिस्बत कैसे मानते हैं Okay, पहली चीज ठीक है टेलीकॉम whatever I'm doing right now is telecom. So my journey was always as a product manager and operations. So entire journey में अगर आप देखोगे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस करे लाइव टीवी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट ई-कॉमर्स एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स राइट इनफैक्ट आई हैव वर्कड ऑन द हैंडसेट साइड एज वेल तो अभी जो स्टार्टअप्स हैं स्टार्टअप्स को मेन क्या चाहिए अब टेक्नोलॉजी चाहिए marketing expenses चाहिए vision चाहिए right so I will not say it's different I will rather say it's all same for me right so in terms the technology background which I have I help startups to basically help bring more user friendly user interface with them correct and at the same time help them or with their strategies as well.
Correct. So it's more or less same. Technology or telecom is only the medium, but as a product and operation, I would rather say it's only one thing. Okay, तो अभी स्टार्टअप का इकोसिस्टम बहुत अच्छा माना जा सकता है इंडिया में, क्योंकि 2016 में अगर मैं देखूं तो जब मोदी जी अपना स्टार्टअप इंडिया लेके आए तो 471 स्टार्टअप थे पूरे देश में, और अभी वो मोर देन 90,000 है। तो आप, जिससे करीब 6 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है, तो आप इस समय स्टार्टअप को किस तरह से देखते हैं कि क्या देश में जो बेरोजगारी की दर 10% तक पहुंच गई है अभी, हाल ही में जो डेटा आया है पीछे, अमूमन वो 6 या 7% पे रहती है, कोविड में 8% गई थी, अभी अक्टूबर में 10% को टच किया है। तो क्या लोगों को एक प्राइवेट सरकारी नौकरी के पीछे जो भागते रहते हैं, जो एक हमारे बाबा चाचा दादा से जो लगातार चलाया कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको ये बनना है, वो छोड़ के क्या उन्हें नौकरी देने वाला बनना चाहिए? क्या उनको अपना कोई स्टार्टअप करना चाहिए जिससे लोगों को, वो 4 जनों को और जॉब दे सके? आप क्या मानते हैं कि आज के समय में क्या बिल्कुल आदर्श समय है उसका? Pushpender, good question. So I would answer in this like follow your passion. So all the individuals who wants to become a founder of a particular company or want to start their own business, follow their passion. अगर आप देखोगे हर किसी का पैशन डिफाइन होता है। अगर मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे डांसर। तो अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं, so dancers are also a startup. They start their own dance studios. Correct. So my only advice to all the new startup is to follow their passion, no matter what happens in future. They should follow their passion and pursue it, and you will get the success. जॉब भी अच्छी है, स्टार्टअप भी अच्छा है, बट स्टार्टअप के लिए आपको बैकअप चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो थिंक ट्वाइस व्हाट यू वांट टू डू। Maybe they continue with their job for 2 or 3 years, save some money and do it. Because अगर आप हमसे पूछोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, हम स्टार्टअप से पूछेंगे आपको पीओसी क्या है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम, राइट। आप हमें पीओसी दिखाओ, कितना धंधा स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइडिएशन पे इन्वेस्ट करते हैं बहुत, बट हम बहुत रेयरली भी इन्वेस्ट इन द आइडिएशन। सो माय सजेशन टू ऑल द इंडिविजुअल्स ओवर हियर इज फॉलो द पैशन। चाहे वो डांसिंग में ही है, डांसिंग इज ऑल्सो अ स्किल, राइट। Open their own studio, make others dance. That's all I want to say for this. सर, मैं आप डेटा एक्सपर्ट भी हैं, तो उस पर भी कुछ सवाल मैं लेके आना चाहता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो डेटा एंड प्रोसेस ड्रिवन साइंस है, यानी कि जो भी कंपनी को लेके आप अपने एम को लेके आपने कंपनी स्टार्ट की, तो आपके पास एक डेटा बनता रहेगा, लेकिन हर एक आदमी उस डेटा का आज के समय में फायदा नहीं उठा पाता है। कुछ लोगों के पास डेटा है, उनको उससे बहुत बेनिफिट हो जाता है, कुछ लोग उसी डेटा के साथ कम फायदा नहीं पाते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके पास बराबर है, इंटरनेट बराबर है, सारी जानकारी सबके पास बराबर है। Pushpinder, you're right in one way, but people are not able to see the insights from the data. So data अगर देखा जाए तो मैं एक वैल्यू का भी आंसर निकाल सकता हूँ, 1000 वैल्यू का भी निकाल सकता हूँ। It goes with the startup to what in depth they want to get the report out of their data. आज की डेट में अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, टारगेट, एक्सक्यूज मी, डिजिटल मार्केटिंग काफी टारगेटेड हो गई है। मैं चाहूँ तो मैं ये बता कर सकता हूँ, मैं वो एडवर्टाइजमेंट शो कर सकता हूँ कि दिल्ली में कैनॉट प्लेस में 12 खंबा रोड पे खड़ा हुआ है, वहां पे मैकडोनल्ड्स है, मैं वहां की मैकडोनल्ड्स की एड शो कर सकता हूँ। बट अगर मैं सिर्फ वहीं तक अटक जाऊं अपने डेटा एनालिसिस में कि मुझे दिल्ली का यूजर चाहिए, राइट, अब तो फिर मैं उसको मैकडोनल्ड्स क्या मैं जेनरिक एड ही दिखाऊंगा, करेक्ट। अगर मेरे पास वो डेटा भी है बैकएंड पे, भाई अवनीश 12 खंबा पे गया था, उसने मैकडोनल्ड्स खाया था पहले, अब मैं दोबारा 12 खंबा रोड पे खड़ा हुआ हूं, तो मैं उसको दोबारा मैकडोनल्ड्स की एड दिखाऊं, क्या पता वो मैकडोनल्ड्स से दोबारा चला जाए, correct. So these kind of minute details are there available, right? Data science, if you talk about data science or AI has evolved, which can give you lots many insights for a particular data.
So it's up to a startup in what depth they want to grow or go, and then formalize it, right? That's where each startup doesn't, you can say, grow at the same pace. It goes with the vision, Pushpinda. ओके, तो एक सवाल है हमारे पास, मैं ले सकता हूँ सर? Yeah, please. प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। हाय, गुड आफ्टरनून सर। मेरा एक सवाल था सर इस स्टार्टअप को लेके। क्या है कि बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई स्टार्टअप की अपनी सोचता है तो उसे किन किन मेन फैक्टर्स को ध्यान में रख के पहले तैयारियां करनी चाहिए स्टार्टअप शुरू करने से पहले? Okay, Vivek. Vivek, to answer your question is like this. First is the thorough research. आपका जो भी आइडिया है उसका रिसर्च करो। आप ये देखो उस आइडिया में कितनी पोटेंशियल है। So research, I'm not only talking about searching on Google and get into the market, do a test marketing sometimes, right? कल को अगर हमें एक वॉशिंग पाउडर ही लॉन्च करना है, टेस्ट मार्केट करके हम क्या कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, राइट? थॉरो रिसर्च इज द मेन थिंग यू शुड हैव और डू बिफोर यू गेट इनटू द फंडिंग स्टेज और बेसिकली लीव योर जॉब एंड गेट इनटू अ बिजनेस. So research, I would say, plays a major role for all those things. Okay, thank you. Thanks, Vivek. फ्लोर क्वेश्चंस के लिए ओपन है, आप में से किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। सो मैं ये पूछ रहा था सर कि आप काफी लंबे समय से प्रोडक्ट और डेटा और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभी किन सुधारों की गुंजाइश है? मतलब स्टार्टअप इंडिया तो गवर्नमेंट लेके आ गया है, तो जो एंजल इन्वेस्टर की बात हमने अभी की, किस तरह के 5 इन्वेस्टर्स आपने बताया कि वो आते हैं, मैं अपना कोई स्टार्टअप लेके आया हूँ, तो मुझे किन किन ऐसी प्रक्रियाओं में समस्या का सामना करना पड़ सकता है? सर्टिफिकेशंस की, जो गवर्नमेंट, मैंने कोई प्रोडक्ट अपना बनाया, तैयार किया, पेटेंट फाइल किया, उसके बाद कहाँ पे वो अटक सकता है, उनमें क्या सुधार की गुंजाइश है जहाँ से वो स्मूथ रनिंग चीजों की होने लगे? Sudhar, okay, so if we talk about the improvements, Pushpinder, again, the mindset of the founders, I would rather say, right? Government help kar rahi hai, correct? Government wants startups to grow and bring some more jobs to the country, right? But startups should have longer vision. मेरा मोटिव पैसा नहीं होना चाहिए कि मैं 2 साल के बाद छोड़ के चला जाऊंगा. My motive should be to stay in the business for at least 5 years or 6 years and help country grow and help others grow to get the job. So that's where I'm telling you, because basis my experience in last 3 months, people are only coming for money. I understand money plays a crucial role, but at the same time, vision and the kind of stickiness to a particular idea has to be there. So that is something which I want. Every startup should think money is the byproduct. They should work on the changes they want to bring to the community or to the technology first. बिल्कुल, तो जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित है, जो लेके आना चाहते हैं अपना कोई ना कोई स्टार्टअप, आपको बहुत अनुभव है, आपने बताया 18 साल हो गए आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए, तो एक इसका सवाल था, उसी के आगे मैं क्वेश्चन करता हूँ अपने इसके सवाल पर ही, कि आपको आने वाले 20 साल में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे लगते हैं जिनमें ग्रोथ की संभावना बहुत है? अगर उनमें आज हम लेके आते हैं अपना स्टार्टअप, तो आने वाले 10 साल में वो बहुत बढ़ेगा। क्योंकि फिनटेक को हम देखें तो पीछे 20 साल पहले हम लोग लाइन में लग रहे थे, इवन जब 2016 में नोटबंदी हुई तब भी लाइन में लग के पैसे एटीएम से निकाले जा रहे थे। उसके बाद पेटीएम एंड ऑल ये सब आगे आजकल यूनिकॉर्न बन के सब चल रहा है लॉकडाउन के बाद। तो वो एकदम से ये 20 साल में सब कुछ बदल गया। हम पासबुक लेके अब बैंक नहीं जाते, अब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, हमारे पास सब कुछ डेटा भी आ गया, अब एटीएम में भी नहीं जाते लोग, ऑनलाइन ही अपना सारा कर लेते हैं। तो वो आने वाले 20 साल में एक बार फिर से टेक्नोलॉजी पलटी मारेगी तो कहाँ पहुंचेगी, किधर रुकेगी, कैसे क्योंकि एआई का बहुत ज्यादा चलन बढ़ गया है और पहले एआई का पता नहीं था। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि
विवेक अनम्यूट करेंगे क्या अपने आप को? हाय विवेक, आई एम आस्किंग टू यू। हाँ, Yes, तो sir. एक टेक्नोलॉजी एआई का है जो लेके आए हैं अभी हाल फिलहाल में, जो आप बता रहे थे मुझे, क्या था वो, एक बार सबको बताएंगे? Yeah, it's I think human pin करके है. हाँ, ह्यूमन पिन करके है, जिससे कि आदमी जो सोचता है वो चीजें होती चली जाती है धीरे धीरे। तो हम जैसे कि 007 में हम लोग जेम्स बॉन्ड में देख के आए हुए हैं सारी चीजें, उधर जो हुआ एडवांसमेंट वो तो नहीं होने जा रहा है इधर, लेकिन फिर भी बच्चों को एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे लगाना है, ठीक है? क्योंकि पैसा स्टार्टअप में लगाते ही तुरंत नहीं आता है, अभी आपको रुकना पड़ता है 2 साल 3 साल 4 साल, बेस बनाना है अभी आपको, पहले अपना पूरा देखना है कि कस्टमर कौन है आपका, कौन खरीद सकता है, कहाँ कहाँ पे आप जाएंगे, कैसे क्या मिलेगा, क्योंकि उसके लिए बैकअप भी जरूरी है, आपने पहले ही बता दिया है। तो अगर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे पैसा, जो भी है, जो भी उनकी शक्ति है, जो भी उनकी ताकत है, जो भी उनकी आयु के वर्ष है, ऐसी जगह पे लगे जो कल को फ्रूटफुल हो, तो वो Right. कौन सी क्षेत्र? So पुष्पिंदर, इसका आंसर बहुत सिंपल शब्दों में दूंगा मैं. ये प्लीज। There is no such field exist in the ecosystem. What exists in the ecosystem is the need. अगर आपको स्टार्टअप का मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको आज की डेट में एक स्टार्टअप है, वो शूज क्लीन करने के लिए घर पे आते हैं. यस यस। अगेन द रिक्वायरमेंट, राइट? आज की डेट में एक स्टार्टअप है जो आपकी कार का सब्सक्रिप्शन लेता है, आपके घर रोज आएगा, कार साफ करके जाएगा, ही विल कैरी द वाटर गन विद हिम, राइट? सो देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर टू योर क्वेश्चन. द ओनली थिंग इज द नीड. One has to identify the need of the customer and what kind of thing he wants to solve, right? Because needs are changing. पहले हमारे घर पे ही आता था कार साफ करने वाला, मैं बुक करवाता हूँ उसको, करेक्ट? क्लासिकल एग्जांपल इज ट्रूमिगो, राइट? सो कार सर्विसिंग के लिए मुझे कार सर्विस स्टेशन जानी पड़ती थी. अब ट्रूमिगो गाइज आर कमिंग एंड सर्विसिंग योर कार एट योर डोरस्टेप. So my answer to your question, there is no specific field. See around you, there is lots of things available. See the need and then work on it. Identify the need of the customer which you think you want. It's there, right? Do the market research and then work on that particular idea. सो हम बिल्कुल सत्र के आखिर में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक्सपर्ट एडवाइस का ये समय है, 5 मिनट बाकी बचे हैं, तो ये तक करीबन 85 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, और यूट्यूब पे कुछ जने थे जो सुन रहे थे, तो ये 100-125 जो लोग हैं जो आपके इसको सुन रहे हैं, और बाद में रिकॉर्डेड भी है सेशन, ये सुनते रहेंगे वो, तो आपका इनको क्या एडवाइस होगा? क्योंकि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिसंबर में अपनी फर्स्ट जॉब में ज्वाइन करेंगे, कोई जनवरी से फर्स्ट जॉब ज्वाइन करेगा, कोई फरवरी से, कोई मार्च से। तो पहली जॉब शुरू करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए इनको, और किस तरह से, ताकि वो लगातार सस्टेनेबल ग्रोथ इनको लाइफ में मिलती चली जाए, जॉब या स्टार्टअप, दोनों के साथ बता दीजिए आप अलग। Thanks, Pushpendra. So my answer to your question is, again, I repeat myself, follow your passion. अगर आप कॉलेज खत्म करने के बाद, ठीक है, जॉब करना चाहते हो तो जॉब करो, बट पैशनेटली करो. If you want to start your own business, do it passionately. So things have changed, Pushpendra, these days. अब लोगों को अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना होता, कोई एक्टर भी बनाता है, राइट? कोई अब शॉप भी बनवाएगा, मतलब शॉप पे भी बिठाएगा, राइट? डांसर भी बनवाएगा, करेक्ट? सो माय ओनली एडवाइस टू ऑल ऑफ यू गाइस इज फॉलो योर पैशन. हाँ, अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो प्लीज डोंट स्टार्ट द बिजनेस, राइट? बिकॉज यू विल बी डिसहार्टेंड, यू विल गेट इनटू द डिप्रेशन, मेरा नहीं चला. स्टार्टअप्स स्टार्ट होते हैं, बंद भी होते हैं, बट कुछ चलते भी हैं. सो दिस जर्नी वी शुड keep it within ourselves. There is, after so many failures, you will succeed. Sometimes you will succeed in your first attempt, but follow your passion. Follow what you want to achieve in your life. Then there is no stoppage for their career growth or startup growth, Pushpendra. That's all. This is something which I am very close to my heart. I want to convey this to everyone right now.
Thanks, So, Pushpinder. अवनीश जी, बहुत शानदार हमारा सत्र रहा। आपने बीते 1 घंटे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो स्टूडेंट्स को नहीं पता थी, और स्टार्टअप को लेके या जॉब को लेके फंडिंग कैसे आएगी, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में आपने नोएडा एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बताया। स्टूडेंट्स में कोई भी अगर सर को रीच आउट करना चाहता है, जैसे प्रिंस ने बोला था, तो सर का जो .com है, नोएडा एंजल इन्वेस्टर्स वेबसाइट है, आप उस पर चले जा सकते हैं। आप सर का प्रोफाइल मैंने पिन कर दिया है, जो मैंने सफलता.com पे पोस्ट किया है लिंक्डइन पे, तो वहां से सर से जाके आप मैसेज में बात कर सकते हैं, या फिर उस वेबसाइट पे जाके सर से आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है या कुछ भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त लगाया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये आपको बताया गया था, और Thanks for giving me this opportunity. It was really great experience. मोस्ट वेलकम सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर। Thanks, everyone.